Previously, we were discussing about power series, how to take the sum of two power series. Today, we are going to discuss how to solve an ODE using power series method. But before that, we need to discuss ordinary and singular points. If we are given any second order differential equation, particularly we are discussing second order differential equation previously. So a second order differential equation is always of this form. I told you y double dash plus a1 of x y dash plus a naught of x y equal to 0. We are still discussing homogeneous second order differential equations. Now, this is basically a normal form. We try to write its standard form, which we have already written in the previous lecture. So this is the normal form. We try to convert it first into standard form. What we do, we divide this coefficient on both sides of this differential equation, which it becomes y double dash a1 of x divided by a2 of x y dash plus a naught of x divided by a2 of x y equal to 0. Now, assuming that this function is p of x y dash plus q of x y equal to 0. Now, what are the ordinary and singular points? A point at which these two functions are this coefficient function, or you can say a point x equal to x naught, which belongs to the domain interval of the differential equation I. Okay, this differential equation is basically defined for all x belongs to I, and this I is subset of R, set of real numbers. So a point this which is in the domain of this differential equation is said to be number one, ordinary point of that differential equation if a2 of x is not equal to 0, a2 of x naught. In fact, whenever we put this x naught into this coefficient function a2 of x, it is not equal to 0. Okay, then this is called ordinary point. It is called a singular point if a2 of x naught is 0. Now, if this is true in case of ordinary point, then this p of x is defined at x naught, and it will be continuous at x naught. Okay. Similarly, q of x is also defined at x naught because a2 of x naught is not equal to 0. But in the case of singular point, if this coefficient function of y double dash a2 of x, if it is 0, then this p of x will be undefined at x naught, and q of x will be undefined at x naught. Okay. In case of ordinary point, we can solve this differential equation, this or this one, using power series method. If the point at which we need to find the power series solution, if this is singular point, then we cannot use simple power series method to solve this differential equation, this one or this one. Okay, so we call it 1 and we call it 2. Okay, in case of singular point,
the ordinary power series method or the power series method cannot be applied to solve this differential equation, because at this point or around this point, this differential equation is no more a second order differential equation, because this coefficient function is 0. This term will be vanished and we are left only with first order differential equation. Okay. In that case, we use the Frobenius series method, which basically is an improved version of power series method in order to in order to solve the given differential equation around these singular points. I hope you get it. If you have any question, you can ask me. So now, if we try to solve any differential equation around a ordinary point, we try to write the usual power series. Okay, in order to solve ODE 1 about an ordinary point x is equal to x naught, we assume the power series solution as what we assume: y is equal to summation n from 0 to infinity Cn x minus x naught whole raised to power n, where x naught is what? X naught is ordinary point, where x naught is ordinary point of ODE 1 or 2, whatever it is. Okay, so now let's start with an example how to solve given differential equation using power series method. In the previous lecture we were discussing, we started an example this one. We were discussing solve the differential equation y double dash plus xy equal to 0. So we need to solve this differential equation. We call it maybe 3. Okay, and we assumed that the solution of this differential equation in the form of a power series about an ordinary point x equal to 0. Okay, we in fact in the question it should be given that solve this differential equation about x is equal to 0. Okay. So what is this point? This is an ordinary point, because what is the coefficient of y double dash? Y double dash. The coefficient of y double dash, in fact, it is, you can say that as a2 of x is what? 1. And if you put x equal to 0 here, a2 of 0 is equal to 1, because the constant function, it is never 0. So what is this point? This point is an ordinary point. Therefore, x equal to 0, x naught, which is 0, is an ordinary point of ODE 3. If it is ordinary point of that ODE, then what we assume as a power series solution, x equal to 0. Now, in that case, if that is ordinary point, the power series solution would be y is equal to summation n from 0 to infinity Cn x minus 0 power n. So it means it becomes x power n. Okay. Now, we assume that the solution is, we assume the power series solution about x equal to 0. We assume
a power series solution out x equal to 0 as, or what would it would be, y is equal to summation and from 0 to infinity Cn x power n, because x naught is 0. Now, if this is assumed solution, what we do, we take the first derivative. I told you how to take its derivative in the previous lecture. If you don't understand this, you can go back and see the previous video of the previous lecture. So we take the second derivative. Second derivative would be n from 2 to infinity, n into n minus 1, Cn x n minus 2. So these are two derivatives which we need in order to solve that differential equation. Why? Because there are two derivatives here of y double dash and y. Now, what we need here, we need y and y double dash. Luckily, we don't have y dash, but normally we have y dash in the differential equation. So now y double dash plus, it was plus xy. So y double dash is what? It is summation n from 2 to infinity n into n minus 1 Cn and xn minus 2 plus x times summation n from 0 to infinity Cn x power n equal to 0. So we have substituted the values of y and y double dash into the given differential equation. I hope you get it. Now this is equal to what? We have x power 1 here and x power n here. We can take this x inside here. Okay. Now the above series can be written as n from 2 to infinity n into n minus 1 Cn x power n minus 2 plus summation n from 0 to infinity Cn x power n plus 1 is equal to 0. Now, how to take the sum of two power series? I have explained these things in the previous lecture in detail. You can see them. What we do, in fact, we try to make summation index and the power of x identical in both series in order to take their sums. Now, this series starts from when we put n is equal to 2 here, it starts from x power 0. And this series, it starts from when we put n is equal to 0, this series starts from x power 1, because whenever we put n is equal to 0 here, we get x power 1. So it starts from x power 1. And whenever we put n is equal to 2 here, this series starts from 0. We cannot take sum of two series when they are starting with the different powers. What we do, we try to make their powers identical first, and then summation index identical. Then we can take their sum. I explained these things in the previous lecture. You can go back and see the previous video if you don't understand it. So first, what we do, we try to make their powers identical, because this starts from x power 1, this starts from x power 0. We open the first index, the first value of index here, n is equal to 2. Whenever we put n is equal to 2, we get, what do we get here? 2 times 2 minus 1, because n is 2, 2 minus 1, C2 x power 0. Okay, plus we'll open only the first index. Okay, now we opened this n is equal to 2. Now the remaining terms will remain same. Now this series starts from n is equal to 3 to infinity. The remaining things will be same, xn x power n minus 2 plus summation n from 0 to infinity Cn x power n plus 1 equal to 0. Now, this series also starts from, when we put n is equal to 3 here, it starts from x power 1. This series also, when we put n is equal to 0, this starts from x power 1. Now, their powers are identical. Okay. This term will keep in the solution, so in this expression,
here, we keep it here, and we try to take the sum of these two power series. Okay. Now, how to do it? Let me go to the other board. Okay. What was it? It was basically, in fact, nothing but 2 times 2, it is 2c2. Okay, x power 0 is 1. So sum n from 3 to infinity, n into n minus 1, cn x power n minus 2. Okay, plus summation n from 0 to infinity, cn x power n plus 1 is equal to 0. Okay. Now, what we do, in fact, I told you in the previous lecture, using this n is equal to 3, what we write n minus 3. Okay, we take this 3 on the other side, we put it a new index. How to change the index now? How to make these summation identical or these powers identical? This is what we are going to do. Here, what we basically insert here, it starts n from 0 to infinity. I told you there are two methods. Either you, if it starts from 0, you leave it in this way, okay, as it is, and you make this n from 0 to infinity, okay? Or the other method I told you that is, I think, more practical. I hope you would be able to understand the other method easily. What we do, we try to make these powers identical. Okay. Here, x power n minus 2, we put n minus 2 is equal to some other index. And here, n plus 1 is equal to some k, maybe l. Okay. Now, we try to make them identical and try to change the here the values or index of the summations. They will become identical. Now, by looking at this one, what we do now, we try to change the values of the summation. N starts from 3 to infinity. So if n is equal to 3, what does it mean? K is equal to, if we put here n is equal to 3, what will be the value of k? K will be 1. And if n is equal to infinity, n is equal to infinity, the value of k should be infinity minus 2 is infinity. Okay. Now, this term, and also here from here, what is the value of n? N is what? From this substitution, n is k plus 2. And what we do, other thing, n minus 1. N minus 1 will be k plus 1. Okay. Now, if we use this substitution, we try to change the values of index. If n is equal to 0, we take the starting value here. If n is 0, what will be the value of L? We put here, n is equal to 0, the value of L will be 1. If n is equal to infinity, the value of L will be infinity, because it's infinity plus 1 is infinity. And similarly, n is what? N is, the value of n will be L minus 1. Okay, now we try to substitute these things into that series. Let me clean this one. N is n, and n minus 1 is k plus 1. Now we try to write it again. The first term will remain same, 2c2 plus. Now summation, this sum becomes now n will be converted into k. If n is 3, k is 1. So it starts from k1 to infinity. N, instead of n, what we put here, k plus 2. Here we have k plus 2, sorry. And n minus 1 is k plus 1. And n is what? N is k plus 2.
k plus 2, and x power n minus 2 is what? N minus 2 is k. Now the other series becomes, now here we had n is equal to 0 to infinity. We have replaced these things with L. So the summation here, it becomes when n is 0, L is 1. So L starts from 1 to infinity. And Cn, what is the value of n here? L minus 1, L minus 1. And x power n plus 1 is L is equal to 0. Okay. Now, I told you that these index are dummy index. I hope you understand what is a dummy index. In fact, whatever you put here, n plus 1, you can put L or P or S or T or whatever. Okay. It doesn't change the series. Now, you can see that if we replace this L by K, it doesn't change anything. K from 1 to infinity, see k minus 1, x power k. So these two series, the sum term is in fact identical to the sum term in the first series. Because here you have k is equal to 1 to infinity, here you have L is equal to 1 to infinity, or k is equal to 1 to infinity. So this term, we don't make it identical, but here you can see that x power k, here you have x power L. You can replace L by k here. So in fact, x power k is identical to x power k. Okay, now you can write only this series as summation k from 1 to infinity, ck x power k. Then you can take common this sum, and x power k here, and x power k here. Okay. Now, how do we write it here? It becomes a 2c2 plus summation k from 1 to infinity. You can take it common, and you have k plus 2, k plus 1, ck plus 2, and plus ck minus 1. Here you must have k minus 1, okay? Because you have CL minus 1, so say here you should have CK minus 1. So it should be k minus 1 and then x power k. Okay, you took the summation term common and then x power k common. It is equal to 0. Okay. Now we can compare the coefficients on both sides. On comparing coefficients on, आप कह सकते हैं coefficients of like powers of x power k, you can say. Or in fact, you are comparing x0, x1, x2, so on. On both sides, we get, what do we get? In fact, what is on the right hand side? 0x power 0, 0x power 1, 0x power 2, plus so on. Okay, you are comparing coefficients on both sides. Here you have x power 0. Okay, the coefficient of x power 0 is what? 2, C2 is equal to 0, and then this coefficient of x, all powers of x, in fact, they are also 0. So what do we get here? K plus 2, k plus 1, ck plus 2, plus ck minus 1. This is also 0. It is, in fact, coefficient of x power 0, and this is the coefficient of x power k. The value of k is what? X power 1, x power 2, x power 3, and so on, because you have k is equal to 1 to infinity. So these are the coefficients of powers of x. Now, from this, you can see immediately that C2 is 0. In fact, what we are going to do here, we are trying to
find the coefficients of power series. We assumed a power series solution, what in the form of a series, summation n from 1 to infinity. What was the power series? Power series was y is equal to summation n from 0 to infinity, cn x power n. This was our assumed solution. But these coefficients cn are unknown. Okay, these are unknown coefficients of in this power series. What we do, we try to find, or we have to find these unknown coefficients. If we can find them, we will simply put them here. We'll get the solution. Okay. Now, here on comparing the coefficients here, what we do, we get the value of C2 and then this expression. This is a recursive relation which help us to find values of all the coefficients. Okay, this is a recursive relation. From here, what we can write ck plus 2 is equal to what? -1 divided by k plus maybe 1 k plus 2 or k plus 2 k plus 1 k plus 1 k plus 2 kar le, times ck minus 1. Okay, here sorry, k should be k starts from 1. Okay, so the value of k should be k is greater than or equal to 1. When k is 1, we get C0 here and C2 here. Okay, the value of C2 is, sorry, when k is 1, we get C0 and here we have the C3. Okay, now this is a recursive relation. We put the values, successive values of k in order to get the values of all the coefficients of this power series. Okay, now let us try to find the values of the coefficients. Let me write it here again. This recursive relation ck plus 2 is equal to -1 over k plus 1 times k plus 2 ck minus 1, where k is greater than or equal to 1. Now, we put k is equal to 1. For k is equal to 1, what do we get? C3 is equal to -1 over, here you get 2 times 3, C0. Okay. When you put k is equal to 2, what do we get? C4 is equal to -1 over 2, sorry, 4 है तो यहाँ पे 5 times 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 पुट किया तो यहाँ पे C1 आ, ठीक है? When we put k is equal to 3, what do we get? C5 is equal to -1 over 5 है तो 6 times 7 C1 नहीं 2 C2 C2 होगा ना? हाँ C2. And when k is equal to 4, we get C6 is equal to -1 divided by 7 times 8 in C3. Similarly, we put the next values of k is equal to 5. What do we get? C7 is equal to -1 over 7 है तो यहाँ पे 8 into 9 C4. Okay, and k is equal to 6. C8 is equal to -1 over 7 times, मैं गलत कर रहा हूँ, 6 है नहीं, 4 पुट किया यहाँ पे, 3 पुट किया, 2 पुट किया, यहाँ पे ये गलत क्या लिख रहे हैं हम? ये 5 6 नहीं आएगा ना?
जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 times 4 आएगा। जब 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 times 5 आएगा। 4 पुट करेंगे तो 5 times 6 आएगा। और 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे 6 times 7 आएगा। 6 पुट करेंगे तो 7 times 8 आएगा। ओके, एंड 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे C5 आ जाएगा। ओके, एंड लेट मी पुट हियर अनदर वन, K7, तो आपके पास यहाँ पे C9 इज इक्वल टू -1/7 है, तो यहाँ पे 8 times 9 आएगा। ठीक है, टाइम्स C6। Now you can see that after 2 values you get C0 and C1. After 2 values you have C2. Okay, the values are basically going to be repeated here. C2 is known. We have already calculated what is the value of C2. The value of C2 is 0. So this whole value becomes 0. Well, when you have C6, you have C3. You have already the value of C3. Okay, you put here the value of C3, which is -1/5 times 6 times, what is the value of C3? Value of C3 is -1 times 2.3 times C0. Okay, this is the value of C3. Value of C7 has C4, which we have already here, C4. You put here the value of C4, which becomes -1/6 times 7 times -1/3 times 4 into C1. You can see the value. See what I am writing here. Okay. Now you have C8, which has C5. You already have C5, which is 0. So this becomes 0 because C5 is 0. And then C6, यहाँ पे आ रहा है, C6 की वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे -1/8 times 9, and the value of C6 is this one, which contains C3, and C3 already is this. So in fact, the value of C6 is this whole thing. You put it here, -1/5 times 6, and then -1/2 times 3 times C0. Okay, you can see this sequence is increasing. These terms are increasing. Now, what is in fact unknown here? The C0 and C1 are unknown. All the other remaining coefficients will be in terms of C0 and C1. You can write more coefficients here, and then we'll try to generalize them. Now, from this information, what do we get here? That if C2 is 0, then C5 is 0, and then C8 is 0. It means C2 is 0, C2, C5, C8, and so on. What we can write here, that C to K is 0. Okay, whatever the value of, from K is equal to 1, 2, 3, so on. We are now going to generalize these coefficients. Okay, 2K, no, 2K plus, 2K plus, क्या आएगा यहाँ पे? 2 नहीं, 3K plus 2 आएगा, है ना? 3K plus 2 maybe. चलें हम इसको लिखते हैं, बाकियों को भी लिखेंगे ना, तो फिर in fact we can write here C, क्योंकि ये 2 है, फिर 5, 3 इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये 2K plus आप इसको 3 कर सकते हैं. When K start from, नहीं ये नहीं होगा यहाँ, 3K plus 2 maybe, 3K plus 1. 3K plus 2 was right, me. 3K plus 2. हाँ, 3K plus 2 ही आएगा if K starts from 0
1, 2, so on. Okay, but we'll revise this after writing the other coefficients. And this is, in fact, all these things are 0. All these coefficients, if you put 0 here, if you put 1 here, we get 5. If you put 2 here, we get 8, and so on. So all these coefficients of that power series will be 0. So 3k plus 2 is okay for the time being, but later on I shall see what would be more appropriate index here. Next, how to generalize? So 2, 5, 8, and so on, all these coefficients will be 0. Now we are going to generalize what? Case 7 अगर ये है और K5 ये है, which has so now what we are in fact will try to do, we'll try to generalize the coefficients which contains only C0, and we'll try to generalize those coefficients also which contains only C1. Okay, because C3 contains C0, and then C6 contains C0, and then C9 contains C0. So what we are going to generalize all the coefficients C3, C6, and C9, and then C12, and then C15, and so on. So we will try to generalize these coefficients C3, C6, and then C9, because all these coefficients, they contain C0, and then we'll try to generalize all the coefficients which contain C1, which are C4, and then C7, and then C10 will be the coefficient which contains C1. Okay, let us do this thing. हमने ये तो generalize कर लिया. Let me write it over here somewhere. Okay, the C3 आपके पास क्या है? It has C0, C6 has C0, and C9 has C0. अब अगर C3 ये है, 6 ये है, C9 आपके पास ये है, ठीक है? तो C9 के बाद C12 आना चाहिए ना? 3, 6, 9, 12. तो आपके पास C12 क्या होगा? If I remove this thing, maybe C, चलें यहाँ पे लिख देते हैं. This recursion relation, I hope you get it, how to write it. Okay, now the first coefficient was what? C3, which is, let me tell you how to generalize them. -1/2 times 3 C0, C3 के बाद C6 है, -1/2 times 3 C6. So 2 times 3 -1/2 2 times 3 -1/5 6. आप इसके साथ -1/5 times 6, और यहाँ पे C0 है. फिर C9 is what? -1/2 times 3 into -1/5 times 6 into -1/what? -1/8 to 9. 8 into 9. 8 into 9 times C0. Yeah, now you can see the pattern of numbers increasing here. Okay. Now C12 should be what? I can write it without even looking at the recursion relation. It should be what? -1/2 times 3 into -1/5 times 6 into -1/8 9 into -1/2 3 5 6 3 ऐड हो रहे हैं. 2 में 3 ऐड हो रहा है, 3 में 6, and then 5 में 3 ऐड हो रहा है, 6 में 3 ऐड हो रहा है. तो 8 में 3 ऐड होगा 11, और 9 में 3 ऐड होगा तो 12, साथ में C0. Okay,
You can see it. इसमें 3 ऐड हो रहा है, इसमें भी 3 ऐड हो रहा है, फिर इसमें 3 ऐड हो रहा है, इसमें 3 ऐड हो रहा है. So next should be 3 ऐड होगा, इसमें 3 ऐड होगा. So similarly, you can write C15 and C18 and so on. So what I'm going to write here, it is C3K plus 3. Okay, where K starts from 0. I'm going to generalize it. Essay, it will be so on, and C3K plus 3 will be what? Minus 1 over 2 times 3 into minus 1 over 5 times 6 into so on into minus 1 over what? यहाँ पे 3K, या इसको भी आप देख लें, यहाँ पे हमने लिखा ना 3K plus 3, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 into what? 3 into 3, हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? This will be C3 into 3 plus 3. अगर यहाँ पे 3 into 3 plus 3 है, तो यहाँ पे क्या है? 2 into 3 means this index 3 यहाँ पे है, इससे पीछे एक उससे less index है. ठीक है? So I can write here 3K plus 2 times 3K plus 3. This times C0. Because आपके पास देखें, sorry, यहाँ पे क्या आएगा? How to write it? 3 नहीं, sorry, यहाँ पे है ना, आपने लास्ट वाले को देखना है. तो 12 है, तो 12 और 11 है. हाँ, ठीक है. सो मैंने ठीक लिखा था, 3K plus 2 और 3K plus 3. ठीक है. So it is so on until this one. Okay. Now अगर हम यहाँ पे सिर्फ C3 लिखें तो क्या आएगा? K की वैल्यू क्या होगी? 0. जब यहाँ पे K 0 है तो टर्म क्या है कि K 0 होगा तो 2, 0 होगा तो 3, 2 into 3 आ जाएगा, which gives us 2 into 3. Okay. और यहाँ पे जब K6 लिखेंगे तो K की वैल्यू क्या होगी? 1. जब आप K1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 5 into 6. तो ये 5 into 6 तक ये जो होगा जनरलाइज टर्म होगी. So this is how I can write the value of C3K plus 3. अच्छा, ये तो हो गया C3, 6, 9 and so on, C12 and so on. So this will be basically generalized expression for C3K plus 3. अच्छा, अब इसमें ये कितनी टर्म्स हैं? How much terms are they? In fact, हमने इस ऊपर वाली -1 को भी जनरलाइज करना है. ठीक है, इसको भी जनरलाइज करना है. ठीक है, अगर आपके पास C3 है तो नेगेटिव आया, C6 में ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया. ठीक है, C9 में क्या होगा? नेगेटिव 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 -1. ठीक है, तो इसको अगर हम मजीद जनरलाइज करें तो ये क्या होगा? -1 पावर, अगर हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब 3 है और 9 है, तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा. अगर इवन आते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ 3 है, तो फिर क्या होगा? पॉजिटिव. ठीक है, क्योंकि 12 में भी ये पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे -1 की पावर आप क्या लिख सकते हो, या आप जब C3 आपके पास आता है तो आप इनफैक्ट K की जगह क्या पुट कर रहे हो? 0. ठीक है, तो इसमें नेगेटिव आ रहा है, तो यहां पे आप 0 पुट करोगे तो नेगेटिव आना चाहिए. इट मींस K plus 1 कर दें यहां पे. अगर आप C1 पुट करोगे तो 6 आ रहा है, 1 पुट करोगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इससे पॉजिटिव हो जाएगा, एंड सो ऑन. सो दिस बिकम्स दिस, एंड नाउ 2 into 3 into, आप ये इसको ब्रैकेट में लिख दें बेशक,
2 into 3 into 5 into 6 and so on into 3k plus 2 times 3k plus 3 times C naught. Yeah. So this will be your C3k plus 3. In fact, all the values of the coefficients, C3, 6, 9, 12, 15, and so on. You have to generalize it yourself. Why do we generalize it? In order to check the convergence of the series. Okay, जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. अब हमारे पास वो तमाम टर्म्स जनरलाइज होगी विच कंटेन्स सी नॉट, और वो तमाम टर्म्स हमने जनरलाइज कर ली विच कंटेन्स C2. ठीक है, कौन सी रह गई? सिर्फ वो टर्म्स जनरलाइज करने के लिए रह गई हैं जो कि विच कंटेन्स C1. ठीक है, विच आर C4, C7, क्योंकि इसमें भी C1 है ना. फिर इसके बाद क्या होगी? C10. अगर ये C7 है तो C10 क्या होगा? देखिए, C4 is this, C7 is what? -1 by 3 times 4 into -1 by 6 times 7 times C1 आ गया. और C7 ही है तो C10 क्या होगा? -1/3 times 4 into -1/6 times 7 into -1/. देखिए 7 है तो यहाँ पे 3 और 4, 3 में 3 ऐड हो रहा है और 4 में 3 ऐड हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 6 में 3 ऐड होना चाहिए, 9 into 7 में 3 ऐड होना चाहिए, 10. यहाँ पे भी C1 आना चाहिए एंड सो ऑन. C10 के बाद हम क्या लिख सकते हैं? C13 एंड सो ऑन. ठीक है, तो अगर हमने ये लिख लिया तो अब हम इसको जनरलाइज कैसे करेंगे? How can we do it? By looking at only the coefficients and the term, the pattern of the term. अब आपके पास यहाँ पे C4 पहली टर्म है, so it may be C3k plus 1. ठीक है, क्योंकि जब K0 होगा K1 होगा, इनफैक्ट K1 होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा. ठीक है, और here K can have value 1. So क्योंकि वो जो प्रीवियसली थी वो हमने 0 से स्टार्ट की थी. चलें देखते हैं. 3k plus 1, k की वैल्यू 0 होगी तो C आपके पास, सॉरी k की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास यहाँ पे 4 आ जाएगा. k की वैल्यू 2 होगी तो 7 आ जाएगा. k की वैल्यू 3 होगी तो 10 आ जाएगा एंड सो ऑन. नाउ दिस कैन बी रिटन एज वही -1 की पावर होगी कुछ, प्लस माइनस को हम बाद में देखेंगे कि क्या है, और नीचे आपके पास क्या होगा? 3 times 4 into 6 times 7 into so on. आखिरी टर्म क्या होगी? यहां पे आपके पास इसको हम क्या लिख सकते हैं? C3 times 3 plus 1. ठीक है, ठीक है. तो अगर आपके पास, या आप यू देख लें, हाँ, आपके पास इसको सॉल्व करें तो 10, ये आखिरी 10 आता है. अगर आप इस 1 को छोड़ दें तो आपके पास 3 into 3 यहां पे आता है. ठीक है, तो आखिरी टर्म क्या होगी? इट शुड बी 3k times 3k plus 1 into C1. ओके, ये जनरलाइज्ड फॉर्म होगी. अब माइनस, जब 3 है तो नेगेटिव है, जब 7 है तो पॉजिटिव, जब आपके पास 10 है तो फिर नेगेटिव. मींस k की वैल्यू अगर 1 है तो नेगेटिव है, 2 है तो ये पॉजिटिव हो गया. यहां पे k लिख दिया. ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू जब 1 होगी ना, यहां पे k की वैल्यू 1 होगी तो C4 आएगा, तो ये नेगेटिव आएगा. जब k की वैल्यू 2 होगी तो वो 7 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस. यहाँ पे आप k लिख दें. ठीक,
So this is basically the general expression for 3k plus 1, or you can say for all the values C4, C7, C10, C13 and so on. अब आपके पास कौन कौन से कोएफिशिएंट्स आ गए हैं? सारे आ गए, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि देखिए हमने पहले क्या लिखा था, C3k प्लस 1 ये है हमारे पास, ऊपर हमने कौन सा लिखा हुआ है, C3k प्लस 3 ये लिखा है ना? हाँ ठीक। लेट मी राइट इट somewhere here. थ्री के प्लस 3 हमारे पास ये है, और 3k प्लस 1 हमारे पास ये है, ठीक है। C3k प्लस 1 हमारे पास क्या है, -1 की पावर k ओवर व्हाट, 3 टाइम्स 4 स्टार्ट होता है ना, 3 टाइम्स 4 6 टाइम्स 7, 3 टाइम्स 4 6 times 7 so on, 3k into 3k plus 1 times C1, okay? अच्छा, 3k plus 1 हमारे पास इसकी वैल्यू ये है, 3k plus 3 की ये है, और C3k plus 2 when k starts from 0, जब 2 है, सॉरी 0 है तो 2, जब 1 है तो 5, फिर 8 एंड सो ऑन। ये सारे कांस्टेंट्स क्या है इनकी वैल्यूज? 0 है ना, हमने पहले 0 लिया हो। अब C3k प्लस 1 ये है, C3k प्लस 2 ये है, C3k प्लस 3 ये है। ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, दे ऑल these expressions they contain all the coefficients of the power series, ठीक है। अब हमारे पास पावर सीरीज क्या थी, y is equal to summation n from 0 to infinity cn x power n, ये था ना सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को हम we can split this solution into 3 powers, मतलब 3 sections, or you can say that accordingly जो हो के हमारे पास कोएफिशिएंट्स। अब n है तो n लिखें या k लिखें, it doesn't change anything, यहाँ पे k लिख दें क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं k में है, यहाँ पे भी k लिख दें, यहाँ पे भी k लिख दें, it doesn't change anything, so indices are dummy। इसको हम लिख सकते हैं समेशन। देखिए अगर आप इसको ओपन करें तो बेसिकली क्या आएगा आपके पास, k0 पुट करें तो C0 प्लस C1x पावर 1 प्लस C2x पावर 2 प्लस C3x पावर 3 C4x पावर 4 प्लस सो ऑन, ये आएगा। हम क्या कर रहे हैं, हमें जो हमारे पास सॉल्यूशंस है ना, C0 if k starts from 0, तो ये क्या आ जाएगा, C3 C0 आ जाएगा, ठीक है। C0 और फिर जब 1 होगा तो 6 आ जाएगा, मतलब ये वाली टर्म C0 और C6 जब आगे जो है C0 और सॉरी हाँ कौन सी टर्म आएगी, C0 रहेगा यहाँ पे। अगर हम C4 C5x पावर 5 C6x पावर 6 C7x पावर 7 C8 पावर x 8 प्लस ऑन करें, इससे कोएफिशिएंट कौन से आएंगे, पहले C0 आएगा एंड देन फिर C3 आएगा, फिर 0 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 6 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 9 एंड सो ऑन। सो C0 C6 एंड C9, इनमें से आप क्या करोगे, ये कॉमन ले लोगे सब में से C0, या इन शॉर्ट आप इसको 3 सीरीज में स्प्लिट अप कर दोगे, ठीक है। क्या होएगा,
summation k from 0 to infinity c 3k plus 3 times x power 3k plus 3 प्लस अब आपने ये जो कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू यहां से उठा के तो पुट करनी है उसमें इन टर्म्स ऑफ सी नॉट प्लस जो 2k plus 2 वाली है सीरीज वो क्या हो जाएगी सारी जीरो हो जाएगी k फ्रॉम 0 to infinity क्या आ जाएगा c3k plus 2 x पावर 3k plus 2 प्लस समेशन नेक्स्ट कौन सी है 3k plus 1 वाली ये वाली है। जब जीरो पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा तो आपके पास k फ्रॉम 0 to infinity तो आपके पास यहाँ पे c 3k plus 1 x पावर 3k plus 1 अब ये वाली सारी टर्म्स तो जीरो हो जाएंगी इसकी एक्सप्रेशन यहां से आएगी पुट कर देंगे और इसका एक्सप्रेशन यहां से आएगा यहां पुट कर देंगे जी बोलें सर ये जो लास्ट टर्म था इसके हमने के 1 से शुरू नहीं किया था 1 से स्टार्ट किया था कहाँ पे C हाँ 3k plus 1 कोई एक 1 से स्टार्ट किया कोई एक 1 से स्टार्ट किया था कौन सा वाला है ये वाला किया था 4 जी से स्टार्ट हो रहा था या यहाँ पे आप 1 से स्टार्ट कर दें यहाँ से C4 एंड सो ऑन था 4 के बाद क्या था 1 पुट करेंगे तो 4 2 पुट करेंगे तो 7 हाँ 4 से स्टार्ट किया था एंड दिस कंटेन्स C1 ये वाला ना हाँ अब आप इन दोनों में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे यू गेट 2 इन फैक्ट सीरीज C0 और C1 वाली टर्म मिस हो रही है ना तो वो कहां से आएगी वो तो रहेगी C0 और C1 आपके पास उस सीरीज में कहां पे है सोल्यूशन जो हमने लिखा था यहां पे वो रहेगी C0 और C1 वाली टर्म रहेगी वहां पे क्योंकि यू मस्ट हैव टू अननोन पैरामीटर्स इन द सॉल्यूशन C0 और C1 क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें क्या होना चाहिए दो अननोन पैरामीटर्स होने चाहिए जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से आते हैं जो कि उसकी 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन बनाते हैं C1 और C0 अननोन ही रहेंगे थ्रू आउट सो दैट इन कांस्टेंट्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग इनिशियल कंडीशन ठीक है जैसे हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आ रही वो यहां पे लिख लें सेपरेट से यहां से दिस इज इक्वल टू C0 प्लस C1x1 प्लस एंड सो अब आप इन तीनों को एक्सपेंड करें अगर सीरीज को तो दिस सीरीज मस्ट कंटेन ऑल द कोफिशिएंट्स अगर कोई नहीं आ रहा तो वो आप सेपरेट लिख लें यहां ठीक है वो फाइनाइट में नहीं होंगे दो ही होंगे जो कि अननोन कांस्टेंट्स जो कि सॉल्यूशन में रहने चाहिए क्योंकि जब k 0 पुट करेंगे तो C3 आ जाएगा जब k यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो C2 आएगा जब k 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे C4 आएगा ठीक है एंड सो ऑन तो C अगर 3 से स्टार्ट हो रहा है तो C 0 और 1 फिर यहां से 2 आएगा यहां से 3 आएगा यहां से 4 आएगा एंड ये रिकर्सिवली ये क्या होगा सारे कोफिशिएंट्स आ जाएंगे ठीक है अब हम जो C3 के प्लस 3 की वैल्यू है यहाँ वहां से उठाएंगे यहां पुट कर देंगे C के प्लस 3 के प्लस 1 की वैल्यू यहां से उठाएंगे वहां पुट कर दो तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा पावर सीरीज सॉल्यूशन So the solution would be y is equal to what C0 plus C1x plus summation बल्कि वो 4 है ना ये 3 है ये 2 है 2 वाली तो 0 हो जाएंगी सारी 3 वाली यहां से आएगी तो C summation k from 0 to infinity summation k from 0 to infinity अब C3k plus 3 की वैल्यू क्या है C3k plus 3 की वैल्यू ये है ठीक है 2 3 5 6 -1 पावर k plus 1
2, 3, 5, 6, so on. So on. Last term क्या थी उसमें? 3k plus 1 थी. 3k plus 2 and 3. 3k plus 2, 3k plus 3 times C naught, है ना? C naught और फिर x पावर 3k plus 3, x power 3k plus 3, x power 3k plus 3, and then plus summation k from 1 से था, k from 1 to infinity. C3k plus 1 की वैल्यू क्या आएगी? 3k plus 1 की वैल्यू वहां पे है -1 पावर k और 3k 3 4 -1 पावर k divided by 3 into 4 and then 6 7 6 7 so on 3k times 3k plus 1 times c1 ही आ रहा ना, c1 and then 3k plus 1 x power 3k plus 1. So this will be your solution. Plus यहां से c naught और c naught यहां से कॉमन ले लेंगे और यहां से c1 और c1 कॉमन ले लेंगे. You'll get 2 series. Okay. So this will be what 1 plus summation k from 0 to infinity -1 की power k plus 1 whole divided by 2 into 3 5 into 6 so on 3k plus 2 into 3k plus 3 into यहाँ पे इसके साथ क्या आएगा x पावर 3k plus 3 times c naught प्लस इन दोनों में से c1 कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा x plus summation k from 1 to infinity -1 power k x power 3k plus 1 whole divided by 3 times 4 6 times 7 so on 3k times 3k plus 1 this times c1. अब आपके पास क्या है ये? This is your general solution. Y is equal to y1 c naught plus y2 c1. तो जनरल सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन इनटू कांस्टेंट, दूसरा सोल्यूशन इनटू कांस्टेंट. वी हैव टू सॉल्यूशंस, ठीक है, एंड टू अननोन पैरामीटर्स. सो इट इज अ फैमिली ऑफ टू अननोन पैरामीटर्स, टू पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस. अब इसमें ये भी सीरीज है, ये भी एक सीरीज है. जब हमने लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि आपका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ टू लीनियर इंडिपेंडेंट पावर सीरीज होगा. अब ये जो दोनों पावर सीरीज हैं दे आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, टू सॉल्यूशंस आ गए, टू लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा. ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट्स हैं ये कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, यूजिंग इनिशियल कंडीशंस. अगर इनिशियल कंडीशन गिवन है आप यहाँ पे पुट करें एंड देन यू कैन फाइंड दीस कांस्टेंट्स. इसके बाद हमने क्या डिस्कस करना है कि ये जो सॉल्यूशंस आए हैं आपके, ये कन्वर्जेंट सॉल्यूशन, क्योंकि सीरीज जब भी आती है, जहां पे भी सीरीज आएगी तो उसकी कन्वर्जेंस हमने डेफिनेटली डिस्कस करनी है. कन्वर्जेंस मींस कि इसका जो सम है वो फाइनाइट है या नहीं. अगर इसका कोई भी वैल्यू एक्स की पुट करें यहाँ पे, तो अगर इसका सम इंफिनिट आ जाता है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंफिनिट आ जाएगा. सो दैट डजंट हैव एनी मीनिंग टू अस. इंफिनिट सॉल्यूशन आ जाता है, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें तो अगर इंफिनिटी आ जाता है तो हमारे लिए तो ये सॉल्यूशन यूजलेस है.
हमें तो ऐसा सोल्यूशन चाहिए जिसकी कोई फाइनाइट वैल्यू हो। सो फिर हम ये देखेंगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट हैं या नहीं, मींस इनका सम फाइनाइट है या नहीं। ये चीज हमने पहले से डिस्कस की हुई है। जब ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था तो उसमें हमने सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को डिस्कस किया था यूजिंग रेशो टेस्ट। मैंने आपसे कहा था कि कुछ और टेस्ट भी हैं जो कि कैलकुलस 2 में आप लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर्स में पढ़े होंगे। ठीक है, ट्राई टू रिवाइज दोज कॉन्सेप्ट्स कि किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंस को हम कैसे चेक करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी एक दो एग्जांपल्स के आपको करवाई थी कन्वर्जेंस की, कैसे रेशो टेस्ट कैसे हम वो यूज करते हैं। ट्राई टू डू दीज थिंग्स, ट्राई टू प्रूव y1 एंड y2 आर कन्वर्जेंट पावर सीरीज, फिर उनका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, उनका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, ये सारी चीजें पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की हैं। आई होप यू कैन डू इट। अभी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask me how to write the journal expressions of these series and then how to write the solution. If you have any problem in this, you can ask me any question. सर आप इसमें एक इनिशियल कंडीशन पुट करके तो दिखा सकते हैं कि किस तरह से इसमें पुट करेंगे। Initial condition, let me check कि मैंने यहाँ पे की हुई है इस प्रॉब्लम के लिए या नहीं। इस प्रॉब्लम के लिए इनिशियल कंडीशन नहीं की हुई, नहीं दी हुई, बट नेक्स्ट एग्जांपल में मुझे देखने दें अगर कोई इनिशियल कंडीशन की है या नहीं। यहाँ पे चलें, नहीं भी की तो मैं आई कैन शो यू समथिंग एटलीस्ट। देखिए, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमारे पास दो इनिशियल कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, और इनिशियल कंडीशंस किस टाइप की होनी चाहिए? they should be y at 0 is equal to maybe 0 and y dash at 0 is equal to maybe some other thing 1. Okay? अच्छा, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे x क्या होगा? 0 होगा और y क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। और यहाँ पे क्या है? x 0 है और y dash 0 है। ठीक है, ये है ना इनका मतलब। अब पहली कंडीशन तो इस पे लग जाएगी, जब x 0 है यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3k प्लस 3 था। ठीक है, यहाँ पे जब x 0 पुट होगा तो ये सारा समेशन 0 हो जाएगा। व्हाट डू यू गेट? यहाँ पे y 0 है। ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट कर दी हमने, इक्वल टू ये वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इट मींस 1 प्लस 0 टाइम्स c नॉट प्लस यहाँ पे देखिए x और यहाँ पे भी x है। जब x 0 पुट होगा तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। जब ये दोनों टर्म 0 होंगी तो आपके पास c1 एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये 0 प्लस 0 इंटू c1। इसका मतलब क्या है कि यहां से आपके पास c नॉट की वैल्यू 0 आती है, क्योंकि यहाँ पे c नॉट इंटू 1 c नॉट आ जाएगा और ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। व्हाट डू यू गेट? c नॉट इज इक्वल टू 0। तो पहला कोफिशिएंट आपके पास आ गया। अब दूसरे कोफिशिएंट के लिए आपने क्या करना है? यू नीड इट्स डेरिवेटिव y डैश। सो इसका y डैश पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, y डैश क्या होगा? यू गॉट इट? यू आस्क्ड मी द क्वेश्चन। यस सर, आई गॉट इट। यू गॉट इट? ओके, अब हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं। The other condition need to have the derivative of the solution. So y dash क्या होगा? यहां पे देखिए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस समेशन का डेरिवेटिव समेशन व्हाटएवर, ये इनफैक्ट डेरिवेटिव इसका होगा तो -1 की पावर k प्लस 1
3k plus 3 times x पावर 3k प्लस 3 माइनस 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और वट एवर नीचे है वो वही रहेगा, टाइम्स c नॉट प्लस यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 प्लस इसका डेरिवेटिव जो भी होगा उसमें x की पावर देखें यहाँ पे वट एवर द सम के साथ जो भी होगा, यहाँ पे -1 की पावर k और ये 3k प्लस 1 नीचे आ जाएगा और x की पावर 3k आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और नीचे वही कोफिशिएंट रहेगा इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा c1। अब ये डेरिवेटिव टर्म है, इसमें y डैश 0 होगा और x 0, y डैश 0 और x 0 पुट कर दें, x 0 पुट करेंगे ये वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी, इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 प्लस 0 टाइम्स c नॉट आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x है, तो प्लस 1 प्लस 0 टाइम्स c1 आ जाएगा, सॉरी y डैश की वैल्यू क्या है 1 है, नॉट 0, ये 1 है ना, हमने ये 1 लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपके पास 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे c नॉट एलिमिनेट हो गया, c1 की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है, तो यहां से आपके पास c1 की वैल्यू 1 आ गई। अब अगर आपके पास इनिशियल कंडीशंस गिवन है, c1 की वैल्यू 1 है, सॉल्यूशन में c नॉट 0 है, ये वाली सीरीज एलिमिनेट हो जाएगी, ये सीरीज खत्म हो जाएगी, आपके पास सॉल्यूशन जो होगा वो सिर्फ यहाँ पे c1 पुट करेंगे, सॉल्यूशन आपके पास सिर्फ ये वाली सीरीज रह जाएगी, that will be your particular solution after using the initial conditions. I hope you get it. Yes, sir. Thank you so much. Okay. Any other question? So try to do a couple of more examples and exercises in my notes regarding these things. And also importantly, try to discuss the convergence of these series using ratio test, जो कि मैंने अपने notes में इसको convergence को prove किया हुआ है. You can try to understand those things. If you don't understand anything, you can ask me in the next lecture. Abhi ke liye sufficient. If you have any question, you can ask me. Otherwise, I'm going to stop this lecture here. No question? Okay, then see you next time in the inshallah in the next lecture. Until then, stay safe and stay at home.